Greetings of the day, everyone. Welcome back to Speak Space. In today's video, we are going to learn about adjectives, which are also known as describing words. I hope you have already checked alphabetical order, sentence, nouns, and the kinds of nouns. So, here, let us see what adjectives are. So, here you go. Chapter 5 Adjectives. So, before I actually start telling you what adjectives are, I would like to tell you the other name of adjectives. What is it? Describing words. What is it known as? Describing words. कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन को या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. So look at these sentences where I had written Raman is a tall boy. What I have written? Raman is a tall boy. So here Raman is a boy, special name of a person. अब यहाँ पे boy कैसा boy है वो? Tall boy. So tall is telling us तो टॉल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव. क्या हो गया? एडजेक्टिव या फिर अब टॉल डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे है? वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय कैसा है. तो हमारा जो टॉल है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हो गया. इज दैट क्लियर? सो वी हैव द सेकेंड सेंटेंस दैट इज दिस इज अ फैट hen. अब hen कैसी है? फैट है. तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव. और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है और ये किसका डिस्क्राइब कर रहा है? hen को डिस्क्राइब कर रहा है. तो हमेशा इन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने याद रखना है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो जिस भी नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, जिस भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो उससे ऑलमोस्ट टाइम्स में पहले आते हैं. Arun has two balloons. How many balloons? Two balloons. बता रहा है कि कितने बलून हैं. तो जब एक एडजेक्टिव नंबर भी बताए, हाउ मच, हाउ मैनी, किस तरह का है, क्या उसका शेप है, क्या साइज है, तो वो सब क्या हो जाती है? डिस्क्रिप्शन होती है नाउन की. बताते हैं कि नाउन कैसा दिखता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पे हाउ मेनी बलून्स वर देयर? टू बलून्स. तो इसी वजह से जो हमारा ये टू वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव. So we had learned here tall, fat, two are the describing words or those are the adjectives. Am I clear? So now we have a definition. Adjectives are the describing words. क्या हैं? Adjectives क्या हैं? Describing words हैं. और वो किसको describe करते हैं? किसी noun को या फिर describe a person, place, animal or birds, places or things. आपको कुछ कुछ याद आया कि हमने ये वाले सारे वर्ड्स नाउन की डेफिनेशन में किए थे ऑलरेडी. सो नाउ लेट अस सी व्हाट डू द एडजेक्टिव्स टेल. क्या क्या हमें बताते हैं? सबसे पहले जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमें नाउन का कलर बताते हैं. लाइक दिस इज द वाइट काउ. काउ का कलर क्या है? वाइट है. डिस्क्राइब कर रहा है कि काउ कैसी है? वाइट है. तो वाइट काउ. तो वाइट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव. आई हैव अ ब्लू बैग. बैग कौन से कलर का है? ब्लू है. तो ब्लू बैग. आई हैव अ पर्पल फोन कवर. कौन से कलर का फोन कवर है? पर्पल. वाइट, ब्लू और पर्पल क्या है? एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. I hope I'm pretty much clear. Now the next thing that adjectives tell us is the shape, right? They are discussing the matter on the round table. कैसा सा शेप है टेबल का? राउंड है. राइट. वो अपना जो सारा मैटर है वो किस पे डिस्कस कर रहे हैं?
राउंड टेबल पे। तो इसी वजह से जो राउंड है वो हमें शेप बता रहा है। किसकी शेप बता रहा है? टेबल की। तो इस वजह से क्या हो गया ये राउंड एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड। वेयर इज, किस तरह का बॉक्स? रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो शेप क्या है बॉक्स की? रेक्टेंगुलर है। दैट इज हाउ दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव or the describing word. She handed me a triangular piece of cheese. कैसा, कौन सी शेप थी चीज की? Triangular. So this is also the adjective and the describing word. Right? I hope you all are clear with the second aspect. Now the third thing that adjective tell us is the size of the noun. Am I clear? What is the third one? Size. The first one was color, the second one was shape, and the third one is size. The enormous elephant trumpeted loudly through the jungle. कैसा सा एलिफेंट है? इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बिग एलिफेंट। ओके, सो इनॉर्मस हियर इज डिस्क्राइबिंग साइज। तो इस वजह से क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हम और क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। The tiny kitten curled up on the couch, purring softly. Kitten कैसा है? Tiny है। क्या साइज है उसका? छोटा है। So that is how tiny is the adjective or the describing word which is showing the size of the kitten. He admired the vast ocean stretching out before him. कितना ओशन? बहुत बड़ा, बहुत ही फैला हुआ। तो कैसा सा ओशन है? वास्ट ओशन है। तो ओशन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? वास्ट। दैट इज हाउ वास्ट इज एन एडजेक्टिव describing the noun ocean. So let us see the fourth aspect. It tells us how many, the number of the nouns. She bought 3 books from the store. How many books? 3 books. So here 3 is Describing the number and hence it becomes the describing word. Now 8 students volunteered to help with the event. How many students volunteered? 8 students volunteered. So how many students? 8. So here 8 becomes adjective and the describing word. And it describes what? It describes the number of the students. Here student is the noun. He saw 2 birds perched on the fence. He saw 2 birds perched on the fence. How many birds? 2 birds. So 2 is telling the number of birds. So birds is the noun. Am I clear, everyone? So let's see. The fifth one is the special quality. Very, very important. Very, very basic. But the quality. So the delicious cake was a hit at the party. What kind of cake? Delicious. So delicious here is describing cake. So it is the adjective or the describing word which is describing the cake which was hit at the party. Her graceful movements captivated the audience. What kind of movements? Graceful movements. What kind of movements? Graceful movements. So here graceful is an adjective describing the movements. The third one is the ancient manuscript contained valuable information. Manuscript is something जो बहुत पुराने ज़माने में जो हमें historical written material मिलता था उसको हम manuscript बोलते हैं. तो वो बोल रहा है जो बहुत पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कंटेन करती थी. अब कैसी सी मैन्यूस्क्रिप्ट थी? एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट थी. सो द वर्ड एंशियंट इज डिस्क्राइबिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट. सो हियर एंशियंट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विच इज टेलिंग अस द क्वालिटी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट.
Okay, so here are the points to remember for the adjectives. So points to remember is, the first is, most of the times a noun is followed by the adjective in the sentence. So हमने ये देखा ही है कि जितने भी adjectives आए वो पहले आए और बाद में noun आया. So noun is followed by the adjective. Okay, so the second sentence is, the adjectives that tells the quality can be placed after the noun they describe. For example, the tea is hot. अब hot क्या है? टी है. पर हॉट कहाँ आया? टी के बाद में आया. तो ऐसा सा केस किस में होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ऐसा हो सकता है कि जो एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो उस नाउन के बाद भी आ सकता है. द अर्थ इज राउंड. अब राउंड कौन है? अर्थ है. राउंड कौन है? अर्थ है. पर राउंड अर्थ के बाद आया है. पर और ऐसा हो सकता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में. मोस्ट ऑफ द टाइम इट कुड हैव बीन द हॉट टी और द राउंड अर्थ. बट जब हम इज की फॉर्म में, जब हम उसको एग्जिस्टेंस की फॉर्म में बताते हैं, तब जो एडजेक्टिव है वो बाद में आ सकता है. सो नाउ let's see the sentences and find out what are the adjectives in here. The bright sun shone down on the peaceful valley. So I hope you are pretty much clear that the here bright is telling us more about sun and peaceful is telling us more about the valley. Let's see the next sentence. She wore a beautiful dress to the elegant dinner. What kind of dress did she wear? Beautiful. And what kind of dinner was it? Elegant. So here are the two adjectives. The old tree in the quiet park had colorful leaves. What kind of tree it was? Old. What kind of park it was? Quiet. And what kind of leaves it had? Colorful. The clever fox outwitted the lazy dog. What kind of fox? Clever. And what kind of dog? Lazy. They lived in a spacious house with a lovely garden. What kind of house? Spacious. What kind of house? Spacious. And with a lovely garden. What kind of garden? Lovely. He bought an expensive watch and a new laptop. What kind of watch? Expensive, costly, and what kind of laptop? New. The delicious cake was a hit at the party. Delicious. The adjective in here is delicious. I hope you have got all the sentences. And now is the do it yourself segment for you. So for this segment, you will get the answers written in the description box below. So don't forget to check the description box before you leave. And thank you for listening patiently. That was all for adjectives. We'll see you soon in the next video. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe for more.